Thank you, Adarsh. ब्रेक पे पूछ लेना, ओके विनय. लेट्स स्टडी फॉर नाउ. मैंने चैट्स ऑफ कर दिया तो शायद तुम ना लिख पाओ अभी. Let me shift this one. ये मेरी ज़रूरत की सामान है ताकि मैं इजीली इसको ना खींच पाऊँ यहाँ से. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. आई प्रॉमिस मैं ये कंप्लीट करके ही सोऊंगी. Evolution, sexual reproduction in flowering plants. Biodiversity and conservation. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetles, and 28,000 of fishes, 20,000 species of orchid, 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes, and 20,000 species of orchid. 20,000 species, 20,000 species of beetles, not beetles, it's orchid and ants. 20,000 species of ants and orchids each. Then 28,000 species of fishes and
3 lakh species of beetles. 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fish, and 3 lakh beetles, 20,000 ants, 20,000 orchid, 28,000 of fishes. Biodiversity is a term popularized by the sociologist Edward Wilson. Biodiversity, Edward Wilson. Combined diversity at all the level of biological organization, genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. 20,000 and 20,000 orchids, 28,000 species of fishes, and 3 lakh species of beetles. Biodiversity term given by Edward Wilson. Combined diversity, all the 3 level of biological organization. Combined diversity at all the level of biological organization. Biodiversity, combined diversity at all the level of biological organization. Combined diversity at all the levels of biological organization. Genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. Genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. Genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic level. Single species, high diversity at genetic level. Over its distributional range, the genetic variation shown by the medicinal plant Rauwolfia vomitoria, growing in different Himalayan regions, might be in terms of the potency and concentration of the active chemical rhizopine that the plant produces. India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. 50,000 strains of rice. 50,000 strains of rice. Okay. Medicinal plant Wolfia vomitoria. Okay, a single species might show high diversity at genetic level. Single species diversity at genetic level. Single species high diversity at genetic level. Example: Rauwolfia vomitoria. Medicinal plant. Okay. Active chemical rhizopine. 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. Species diversity, a greater amphibian species diversity. Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. Ecological diversity, India. Desert rainforest, mangrove, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than Scandinavian country like Norway. Biodiversity and its conservation are a vital environmental issue. Species diversity, genetic diversity, and species, genetic and ecological diversity. Species diversity. Western Ghats have a greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. Ecological diversity. India, rich ecosystem and greater ecosystem diversity than Norway. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. The total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. Okay. Some extreme estimates range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May placed the global diversity at about 7 million. Global species diversity at about 7 million. Some extreme estimate range from 20 to 50 million. More than 70% of
All the species recorded are animals, while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperm and angiosperm comprises no more than 22% of the total. 70% animals, 22% plant, making up more than 70% of the total. Among animal, insect are the most species-rich taxonomic group. Insect, making up more than 70% of the total. That means out of every 10 animal on this planet, 7 are insect. The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. Invertebrates, insect. Then other animals, molluscs, crustaceans, mollusk. Okay, inside insect, insect. Then other animal group, molluscs, and finally crustaceans. Okay, fishes, vertebrates, fishes, then birds, reptiles, amphibians, and mammals. Fishes, most abundant. Fishes, then birds, then reptiles, then amphibia, and finally mammals. Angiosperm, fungi, angiosperm, fungi, then algae, mosses, ferns, and allies, and finally lichens. Representing global biodiversity, proportionate number of species of major taxa of plant, invertebrates and vertebrates. Okay, insect, other animal group, crustaceans, last much mollusk and crustaceans. Algae, mosses, ferns, and lichens. It should be noted that these estimates do not give any figure for prokaryotes. India has 2.4% of world's land area. It shares global species diversity 8.1%. 2.4, 8.1. Global species diversity is an impressive 8.1%. Global species diversity is an impressive 8.1%. 12 mega diversity countries. 12 mega diversity countries of the world. 45,000 species of plant, twice as many of animals recorded from India. Means global estimate 22% of the total species have been recorded. Latitudinal gradient. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. With very few exceptions, tropics. Latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than temperate or polar region. 1,400 species of birds. New York, 105 species. Greenland, 56 species. Colombian, Greenland. Speciation is generally a function of time. Tropical environment, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization, and lead to a greater species diversity. And there is more solar energy available in the tropics, which contribute to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. Species area relationship. During this pioneering and extensive exploration in the wilderness of South America jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region
Species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit. In fact, the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turned out to be rectangular hyperbola. Species richness area. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log s is equals to log c plus z log a, whereas species richness intercept y intercept, okay, plus z. Slope of the line, regression coefficient. Slope of the line, regression coefficient. Area. Ecologists have discovered that the value of jet line in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the reason. Whether it is the plant in Britain, birds in California, or mollusk in New York State, the slope of the regression line are amazingly similar. But if you analyze the species area relationship among very large areas like the entire continent, you'll find that the slope of the line to be much steeper. For example, frugivorous, fruit-eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, 1.15. The importance of species diversity to the ecosystem. Diversity and conservation. Line species inventory is more complete in temperate as compared to tropical countries. ठीक है? अच्छा, इसमें मेरे को एक बात बतानी है, इस ये जो नंबर है प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस नंबर. प्रोकैरियोट्स नॉट इंक्लूडेड. ये सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई इन सब का नंबर है. प्रोकैरियोट्स को हम इंक्लूड नहीं करते बायोडाइवर्सिटी में क्योंकि उनका तो मिलियंस में जाएगा नंबर. हम काउंट ही नहीं कर सकते प्रोकैरियोट्स को. इसके रीजन आगे बताएं क्यों नहीं काउंट कर सकते. अब यहां से यहां तक ये तुम्हें डेटा लर्न होना चाहिए. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पॉइंट. ठीक है, माने कितने पॉइंट हो गए? 3, 3, 6, 3, 7. 7 पॉइंट्स तुम्हें ऐसे कैसे लर्न करने. पहला, एनिमल ज्यादा है, प्लांट्स कम है. 70% ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स. प्लांट्स और फंजाई को मिला के 22% है. ठीक है, बाकी जो बचा वो बैलेंस में जो ऑर्गेनिजम्स है वो. ठीक है, देन 70% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इंसेक्ट्स. हर 7 जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं. 10 में से 7 इंसेक्ट्स हैं. देन जो फंजाई स्पीशीज है उसको अगर हम देखें कितना नंबर है तो वो फिश प्लस एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल प्लस मैमल्स को मिला के उससे भी ज्यादा हमारी फंजाई की स्पीशीज है. मतलब कि जो वर्टिब्रेट है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है. बर्ड्स नहीं है इस इक्वेशन में. ऐसे याद रखना, बर्ड जो है उड़ गए, यहाँ पे मिलती है. इतनी स्पीशीज की अगर आप बात करोगे तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी हो जाएगा. एंड देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितने प्रकार का इको. ये हम 1 ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं. मजे ही मजे हैं हमारे. ठीक है ना. अगर प्लांट्स की बात करें हमारे पास 45,000 प्लांट स्पीशीज है. एनिमल्स का डबल है 90,000. लेकिन क्योंकि रॉबर्ट मे ने कहा है कि अभी तो सिर्फ 22% डिस्कवर हुआ है तो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इंडिया में 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीशीज मिलेंगे अगर पूरी डिस्कवर हो जाए तो, और 3 लाख से ज्यादा एनिमल्स मिलेंगे. ठीक है, आगे करो कि भैया बायोडाइवर्सिटी क्या पूरी दुनिया में एक जैसा ही मिलती है या कहीं ज्यादा कहीं कम मिलती है. तो हमने देखा है कि भैया लैटिट्यूडनल पैटर्न रहता है बायोडाइवर्सिटी का. मतलब कि अर्थ की जो सेंट्रल लैटिट्यूड है, इक्वेटर, इसके पास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है. इक्वेटर में यहाँ पे ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक्स हो गए. ये ट्रॉपिक्स हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. फिर यहाँ पे टेम्परेट जोन आ गई और इधर आ गई पोलर. नीचे सिमिलर यहाँ पे टेम्परेट आ गई और यहाँ पे आ गई पोलर. तो ये लैटिट्यूड हो गई. यहाँ पे 0 डिग्री होती है, यहाँ पे 90 डिग्री लैटिट्यूड होती है ना. तो इनसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी. सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अपने को ट्रॉपिक्स में मिलेगी. तो ये एक लैटिट्यूडनल पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का. स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स में, फिर टेम्परेट में, फिर पोलर एरियाज में. अगर हम बर्ड्स का एग्जांपल लें तो एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं जो कोलंबिया है वो यहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल ट्रॉपिक इक्वेटर के ऊपर पड़ता होता है कहीं पे. इसके पास 1400 स्पीशीज है बर्ड्स की. अगर से थोड़ा ऊपर जाएंगे, न्यूयॉर्क की बात कर रहा है, 41 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा है, तो उसके पास 105 डिग्री लगी है. ग्रीनलैंड बिल्कुल ऊपर 71 डिग्री नॉर्थ पे है तो उसके पास 56. तो आप ये देखना पैटर्न, यहाँ पे 1400 तो यहाँ पे 105, यहाँ पे 56. तो यहाँ से यहाँ बर्ड्स का नंबर घट गया. और इंडिया की बात करें तो इंडिया का बहुत सारा रीजन हमारा टॉपिकल रीजन में पड़ता है. यहाँ पे तो हमारे पास 1200 स्पीशीज बर्ड्स हैं. अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अराउंड 1300 के आसपास
जो कि पूरा ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, ठीक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती का 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है, इसको लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 20% ऑक्सीजन आ सकता है, लंग्स पे आ सकता है, देन मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी दुनिया में यही देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देखने मिलती है, पूरा का पूरा ट्रॉपिक्स में पड़ता है, कितनी कितनी स्पीशीज मिलती है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे कि 40,000 प्लांट स्पीशीज है, 45,000 तो इंडिया में है, तुम क्या बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। 3,000 स्पीशीज फिश की भी बहुत ज्यादा नहीं है, 28,000 तो फिश हमारे पास टोटल, तुम्हारे पास 3,000 है, बताओ। बर्ड्स की 1300, इंडिया के पास 1200 है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है इंडिया में। मैमल्स और एम्फीबियंस 427 और रेप्टाइल्स की बिल्कुल कम 378 और इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000। 2 मिलियन इंसेक्ट्स ऐसे करके बैठे हुए हैं टॉपिक्स में, कब आएंगे हमारी ह्यूमन राइट्स वगैरह डिस्कवर करेंगे, दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। व्हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इन टॉपिक्स इज मोर, 3 रीजन है। ट्रॉपिकल एरिया एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया, ज्यादा स्पीशीज लेकर क्यों बैठा है, मोर सनलाइट, सीधी सी बात है, ज्यादा सनलाइट, ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आगे टॉपिक लेवल पे पास करने के लिए। नो ग्लेशिएशन, नो ग्लेशियर्स, नो डिस्टर्बेंस, तो लाइफ यहां खत्म ही नहीं हुई है। My favorite subject is either science or math. I can't choose. My favorite subject is maths. टेम्परेट में बार-बार ग्लेशियर आ रहे हैं, लाइफ खत्म करके दोबारा जनरेट करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट, लेस सीजनल, गर्मी सर्दी ज्यादा चेंज नहीं है, एक नेचर है, गर्मी बढ़ रही है और बारिशें हो रही है, तो उससे क्या होता है, नी स्पेशलाइजेशन ज्यादा रहता है। ये 3 रीजन हैं, इनको ध्यान से हमें लर्न करना है। एक पैटर्न तो हो गया तुम्हारा जो लैटिट्यूडनल पैटर्न है, जो दूसरा पैटर्न है दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये दिया था भाई साहब ने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जो कि साउथ अमेरिकन जंगल में जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन भाई जर्मन था, भाई था जर्मन, साउथ अमेरिका के जंगल में जाके उसने ये बात पता लगाई। इसने क्या कहा, जितना तुम एरिया कवर करोगे तुम्हारी स्पीशीज रिचनेस बढ़ती रहेगी। एरिया कवर करते रहोगे, एरिया कवर करते रहोगे, जैसे मैं ग्राफ बनाऊंगी एरिया और स्पीशीज रिचनेस का, तो ये ऐसे बढ़ती रहेगी, लेकिन एक टाइम तक ये ऐसा नहीं कि कंटीन्यूअस ऐसे बढ़ती रहेगी, बाद में ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी में मैं ग्राफ लेके आई हूं, मैं एनसीईआरटी ले आती हूं। एनसीईआरटी कहां है मेरी, ये डिग्री मिल गई, ये आ जाओ पेज नंबर पेज नंबर 220 पे आ जाओ। ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि भैया स्पीशीज रिचनेस एरिया एक्सप्लोर्ड के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन ओनली अप टू अ लिमिट, ठीक है। ग्राफ इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, एंजियोस्पर्म्स के लिए, बर्ड्स के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। इसी का अगर लॉग निकाल दोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इक्वेशन क्या है इसकी, स्कार्स, स्कार्स से याद रखना, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट की इक्वेशन है स्कार्स, SCAZ, स्कार्स, Z A के ऊपर है, ठीक है, पावर में है, और लॉग निकालेंगे तो log S इक्वल टू log C प्लस Z log A, ये Z नीचे उतर के कूद के, यहाँ से नीचे उतर के कूद के सामने आ जाएगा, तो ये सीधी लाइन लॉग की बन जाएगी। वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता नहीं है जो ये शेप दिया है, तो एनसीईआरटी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की शेप आ जाएगी, जिसमें S क्या है, स्पीशीज रिचनेस, A क्या है, एरिया, Z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, और C क्या है, वाइड इंटरसेप्ट है। Z जितना ज्यादा स्टीप होगा, देखो जो Z है वो ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये Z की वैल्यू है, ये इसकी Z की वैल्यू मोर है, यहाँ पे ज्यादा स्टीप है, यहाँ Z की वैल्यू लेस, ठीक है। तो इन जनरल Z की वैल्यू बहुत कम रहती है, 0.1 से 0.2 के बीच में रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट्स की बात करोगे, मान लो पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में स्पीशीज ढूंढते हो, कितनी स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है, तो Z की वैल्यू बहुत स्टीप हो जाती है, 0.6 से 1.2 हो जाती है। देखो 0.1 से 0.2 है, वैसे नॉर्मल में 0.1 से 0.2 है, लेकिन अगर पूरा इंटायर कॉन्टिनेंट छान मारोगे किसी चीज के लिए, स्पीशीज को ढूंढने के लिए, कितनी स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है, तो 0.6 से 1.2 पे चली जाएगी। एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्रूजिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स का, आपने इंटायर कॉन्टिनेंट छान मारे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट छान मारे आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, तो वहां आपको Z की वैल्यू मिली है 1.15, क्योंकि आप ये कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, कॉन्टिनेंट की बात करें तो 0.6 ऊपर वैल्यू जाएगी। अगर आप कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे तो 0.6 से नीचे वैल्यू रहेगी, 0.1 से 0.2 के बीच में वैल्यू इसकी रहेगी। एक ही वैल्यू याद रखिए 1.1। स्टीपर स्लोप का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी पूछा हुआ है, इसको आंसर कर रहे हो। स्टीपर स्लोप मींस नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड आर इंक्रीजिंग फास्टर देन द एरिया एक्सप्लोर्ड, मतलब एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो, स्टीपर स्लोप का मतलब है कि स्पीशीज को ज्यादा ही मिल रही है आपको, कम स्लोप का मतलब है कि स्पीशीज आपको कम मिल रही है एरिया एक्सप्लोर के हिसाब से। स्टीपर स्लोप usually means number of species. Number of species found are increasing. हमें स्पीशीज को ज्यादा ही मिल जा रही है, ठीक है। इतना ही आपको लग रहा है, सीधा सा क्वेश्चन आ गया था कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बताओ, किसने बताया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आंसर था इसका। तो डरना नहीं है, ग्राफ याद कर लो, Z की वैल्यू याद कर लो, इक्वेशन याद कर लो, साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, मीनिंग चाहे ना भी समझ में आए, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, भैया क्यों आपको स्पीशीज में इतनी डाइवर्सिटी चाहिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट। जिंदगी में मेरे टेंशन करिए घर में, क्यों चाहिए आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि कम्युनिटी जिनमें ज्यादा स्पीशीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी कम्युनिटी उतनी स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी का मतलब है, स्टेबिलिटी की 3 निशानियां हैं। एक, स्टेबल कम्युनिटी जो है वो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं शो करेगी, प्रोडक्टिविटी
मैनमेड डिस्टर्बेंस से रेजिस्टेंट होगी प्लस एक्सोटिक या एलियन स्पीशीज से रेजिस्टेंट होगी। तो ये तीन क्राइटेरिया है किसी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के। जितनी ज्यादा स्पीशीज आप डालते जाओगे कम्युनिटी में उतनी ज्यादा उस कम्युनिटी की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा स्पीशीज रिच होगा उतनी ही कम्युनिटी स्टेबल होती जाएगी। ये किसने बताया हमें? ये डेविड टिलमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। उसने आउटडोर प्लॉट्स को देखा और उसने दो चीजें पाई कि जिन प्लॉट्स में ज्यादा डाइवर्सिटी थी उनकी स्टेबल जो प्रोडक्टिविटी थी वो ज्यादा स्टेबल थी ईयर टू ईयर, और जिनके पास ज्यादा डाइवर्सिटी थी उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा थी एज कंपेयर टू ऐसे प्लॉट्स जिनमें स्पीशीज जो है वो कम पाई जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? जल्दी बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ड्रॉपर्स बैच जो है आप लोगों का 13 मई से शुरू हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन अभी शुरू कर दूंगी। अगर आप मेरे ड्रॉपर्स बैच में आना चाहते हैं, डिटेल्ड वर्जन लेक्चर्स के पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नीट 2025 देना चाहते हैं, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 11वीं का अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 12वीं का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, वो बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वही डिटेल लेक्चर रहेंगे वहां पे। ठीक है, मेरे सभी के सभी जो क्लासेस हैं वो नीट विद अस ऐप पे चलेंगी। नीट विद अस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे फ्री क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे। मेरे 100 क्वेश्चन मैं खुद से बनाती हूँ बैठ के। डेविड टिलमैन ने क्या कहा था? उसने कुछ एरिया कुछ जमीन के टुकड़ों को स्टडी किया, उसने पाया कि जिस टुकड़े में ज्यादा स्पीशीज थे वो टुकड़ा जो है ज्यादा स्टेबल था। कैसे स्टेबल था? उसकी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट थी ईयर टू ईयर, और उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी उस पीस ऑफ लैंड के कंपैरिजन में जहां स्पीशीज रिचनेस कम थी। एंजियोस्पर्म ज्यादा नहीं है, हां बेटा, ये फंजाई ज्यादा है और काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। मैंने चेक किया होगा उसके बाद। ठीक है, अब आ जाएंगे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। पहली बात रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? पॉल एहरलिच नाम का बंदा था जो कि स्टैनफोर्ड में जो है वो साइंटिस्ट था, स्टैनफोर्ड का साइंटिस्ट था, इकोलॉजिस्ट था, पॉल एहरलिच। उसने कहा कि भैया एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर करेंगे, रिवेट्स मतलब नट बोल्ट होते हैं, उसको हम स्पीशीज से कंपेयर करेंगे। कुछ रिवेट्स जो है यानी कुछ स्पीशीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पीशीज की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो नट बोल्ट चेयर में लगा हुआ है एरोप्लेन की वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो नट बोल्ट जो रिवेट पंख में लगा हुआ है एरोप्लेन की वो इंपॉर्टेंट है, वो स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। तो उसने एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से और रिवेट को कंपेयर किया स्पीशीज से। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या कहा कि मान लो एरोप्लेन में बैठने वाले सभी पैसेंजर एक रिवेट निकाल के ले गए। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारे इकोसिस्टम से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। तो शुरू में एरोप्लेन को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनिशियली इकोसिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा, फंक्शन रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको कुछ स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो। परंतु यदि आप ज्यादा से ज्यादा रिवेट पैसेंजर्स जो है निकाल के लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जा रही है तो अल्टीमेटली प्लेन को अनस्टेबल होना ही है। इसका मतलब इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस्ड हो ही जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ऑल्सो कौन सा रिवेट निकाला जा रहा है वो भी मैटर करता है। अगर पैसेंजर चेयर का रिवेट निकाल के लेके जा रहे हैं तो इतनी जल्दी प्लेन अनस्टेबल नहीं होगा, मतलब इकोसिस्टम से अगर आप कोई अनइम्पोर्टेंट स्पीशी को निकालो तो इतनी जल्दी वो अनस्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई की स्पीशी को खत्म कर दिया, मतलब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवेट को निकाल दिया, मान लो जो विंग्स में लगा हुआ रिवेट है उसको निकाल दिया, तो आपका एरोप्लेन एकदम से क्रैश भी हो सकता है। तो की स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है, आपका इकोसिस्टम एकदम से डिसबैलेंस हो सकता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे आ जाएंगे। कितना कहां से क्या लॉस है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स एज सच लर्न करने हैं। 4-5 पॉइंट्स हैं लर्न करने हैं। पहला, पैसिफिक आइलैंड्स में ह्यूमंस गए और वहां की हमने 2000 नेटिव स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को एक्सटिंक्ट कर दिया, ये लर्न करना। दूसरा, IUCN ने एक रेड लिस्ट निकाली है जिसमें उसने बताया कि कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, और अगर पिछले 20 सालों की बात करें तो 27 स्पीशीज जो हमारी एक्सटिंक्ट हुई हैं। ईयर्स से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। ठीक है, कितनी एक्सटिंक्ट हुई है भैया? सबसे ज्यादा जो है वो इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हुए 359 स्पीशीज, फिर वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हुए 338 स्पीशीज, फिर प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए हैं 87 स्पीशीज। इनसे इतना क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि भैया रीसेंट एक्सटिंक्शन में से कौन सा कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है? डोडो एक्सटिंक्ट हुआ है मॉरिशस से, क्वागा एक्सटिंक्ट हुआ है अफ्रीका से, थाइलासाइन एक्सटिंक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, और स्टेलर सी काउ एक्सटिंक्ट हुई है रशिया से। ऑल्सो टाइगर की 3 सब स्पीशीज बाली, जावन और कैस्पियन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये इन पे PYQ आ चुके हैं। देन 15,500 स्पीशीज के ऊपर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन लटक रहा है कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, और सबके ऊपर इक्वल नहीं लटक रहा है। सबसे ज्यादा थ्रेटेंड है, आज आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा उसकी स्टोरी में मैंने पूछा था कि कितने परसेंट एम्फीबियंस को थ्रेट है। 32% एम्फीबियंस को, सबसे ज्यादा एम्फीबियंस इस वक्त थ्रेटेंड है। जिम्नोस्पर्म्स उसके बाद 31%, तो उसके बाद मैमल्स 23%, तो उसके बाद बर्ड्स 12% जो है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं।
अभी 6th मास एक्सटिंक्शन जो है चल रहा है, उससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, लेकिन 6th मास एक्सटिंक्शन में जो सबसे बड़ा फर्क है पिछले 5 से वो ये है कि ये 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 5 मास एक्सटिंक्शंस। और हमने अगर उसको नहीं बचाया तो अगले 100 सालों में 50% ऑफ ऑल स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी। वही बात है जो मैंने बात की थी कि 200 सालों में 100% खत्म हो जाएंगी और 100 सालों में 50% खत्म हो जाएंगे। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसको हम याद करेंगे होआक से, HOAC, ये 4 चीजें जो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कराती है, जिसमें नंबर 1 है, ये PYQ की नंबर 1 कौन सा है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, कौन नंबर 1 जिम्मेदार है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन जो H का है। O मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन, A मतलब एलियन इन्वेजन, C मतलब को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में आप क्या लर्न करेंगे कि भैया सबसे ज्यादा जो इस वक्त हैबिटेट लॉस हो रहा है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से हो रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कभी दुनिया का 14% एरिया कवर करते थे, आज वो सिर्फ 6% एरिया कवर करते हैं। ये जो हमारे लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, हम अपने ही लंग्स को काटते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है मैमल्स और बर्ड्स पे, क्योंकि उन्हें काफी बड़ी टेरिटरीज चाहिए होती है, और खासकर जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेशन के लिए उनको बड़ा स्पेस चाहिए होता है। मैमल्स और बर्ड्स इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, प्लस माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म जो है इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ओवर एक्सप्लोरेशन से हमने बहुत लोगों को एक्सटिंक्ट कर दिया है, उसमें एग्जांपल है स्टेलर सी काऊ का, प्लस पैसेंजर पीजन का, प्लस बहुत सारी मरीन फिश की स्पीशीज जिनको हम कमर्शियली यूज करते हैं, खाते हैं, वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, क्योंकि हम पकड़ पकड़ के उनको टिन में डाल डाल के बेच दे रहे हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, पैसेंजर पीजन, स्टेलर सी काऊ और मरीन फिश। ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे नहीं बिलोंग करता, आप उसको उठा के वहां पे डाल देंगे तो उसका नेचुरल प्रेडेटर तो है नहीं कोई वहां पे, तो वो उस एरिया की बहुत सारी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर देगा। इसके हमारे पास कितने एग्जांपल्स हैं? 3 एग्जांपल्स हैं। पहला, नाइल पर्च जो है लेक विक्टोरिया में छोड़ दी गई, वहां पे उसने 200 स्पीशीज ऑफ चिकलेड फिश को खत्म कर दिया। अफ्रीकन कैटफिश जो है हमने इलीगली इंडियन रिवर्स में डाल दी, तो उसने इंडियन कैटफिश को खत्म करने के कगार पे है। ठीक है, थ्रेट बनी हुई है ये हमारी इंडियन कैटफिश के ऊपर। एंड देन 3 स्पीशीज ऑफ वीड्स हैं, एक्सोटिक वीड्स हैं जो इंडिया में है, और वो बुरे तरीके से बाकी प्लांट्स को हार्म करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तेजी से ग्रो कर जाते हैं। वो कौन कौन सा है? कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटाना एंड वाटर हाइसिंथ व्हिच इज आइशोर्निया। को एक्सटिंक्शन क्या होते हैं? जब कोई एक स्पीशी दूसरी स्पीशी पे डिपेंडेंट होता है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है कि तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, मर जाऊंगी तेरे बिना। तो अगर एक स्पीशी एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसमें आप 2 एग्जांपल पढ़ोगे यहाँ पे, एक तो होस्ट और पैरासाइट्स का। अगर होस्ट फिश है और उसके ऊपर मान लो पैरासाइट्स है, और वो सिर्फ उसी फिश के ऊपर पैरासाइट रहते हैं, ये फिश जैसे ही एक्सटिंक्ट तो ये सारे पैरासाइट अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देन प्लांट पॉलिनेटर्स का, एक प्लांट मान लो एक ही पॉलिनेटर से पॉलिनेट होता है, जैसे यूका एंड द मॉथ। अगर यूका खत्म हो गया तो मॉथ भी खत्म हो जाएगी, मॉथ खत्म हो गया तो यूका भी खत्म हो जाएगा। फिग एंड द वास्प, अगर फिग खत्म हो गया तो वास्प खत्म हो जाएगी, वास्प खत्म हो गया तो फिग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंजर्व कैसे करना है, क्यों करना है, कंजर्वेशन पे आ जाओ। पहले तो क्यों कंजर्व करना है, उस पर आप 3 अप्रोच पढ़ते हो, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल अप्रोच। ब्रॉडली नैरोली यूटिलिटेरियन पहले कहता है यार इतना सामान मिलता है हमें, फूड मिलता है हमें, हमें फायरवुड मिलता है, हमें टिम्बर मिलता है, हमें पेंट मिलते हैं, हमें डाई मिलती है। आपको पता है 25% जो ड्रग्स हैं वो पौधों से मिलती है, प्लांट से मिलती है। आपको पता है 25,000 प्लांट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते हैं। तो आप तो वैसे ही मर जाओगे, आपकी दवाइयां नहीं मिलेंगी तो आपको। ठीक है, तो ये सब जो है भैया बहुत फायदा दे रहे हैं, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दूसरी स्पीशीज को बचा के रखिए। यहाँ पे एक टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग आपको बताना चाहिए, जब आप बायोडाइवर्सिटी को छान मारते हो हर लेवल पे, चाहे वो स्पीशीज लेवल पे, चाहे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे, चाहे इकोलॉजिकल लेवल पे, किसी लेवल पे। ठीक है, जब आप बायोडाइवर्सिटी को छान मारते हो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट केमिकल्स, तो उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये तो हो गई नैरोली यूटिलिटेरियन। अब आगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, यार तुम सिर्फ ऐसी चीजों को क्यों देख रहे हो जो तुम पैसे से तोड़ सकते हो। अब हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, इकोसिस्टम सर्विसेज वाली बात हो गई है, तो ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका कोई मोल है, लेकिन क्या तुम ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हो? अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं तुम्हारे इंसेक्ट्स, क्या तुम उसके पैसे दे सकते हो? अगर पॉलिनेशन निकलेगी तो खाओगे क्या? तुम फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे, तुम्हारी वेजिटेबल्स ही नहीं बनेंगी। ठीक है, देन ये जो एस्थेटिक प्लेजर ले रहे हो तुम, ब्यूटी देख रहे हो, कहां से देखोगे अगर तुमने सारा का सारा इकोसिस्टम को खत्म कर दिया और स्पीशीज को तुमने खत्म कर दिया? ठीक है, डियर नहीं रहेंगे देखने के लिए, क्या देखोगे तुम जाके? तुम जंगल में क्या देखने जा रहे हो? ठीक है, ये सारी चीजें इकोसिस्टम सर्विसेज में आ गई, जिनका पैसा नहीं है, मोल नहीं है। सॉइल फॉर्मेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, इनका क्या पैसा दोगे भाई तुम? ये आपको चाहिए, तो आपको अपनी उसको जो है बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। ये आपकी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अप्रोच है। एक है एथिकल अप्रोच, गोली मारो ह्यूमन के बेनिफिट को, नहीं बात करनी मुझे ह्यूमन
क्या है भैया, हर स्पीशीज को इस प्लैनेट पे रहने का अधिकार है, क्योंकि ये प्लैनेट जितना ह्यूमंस का है उतना दूसरी स्पीशीज का भी है, चाहे वो ह्यूमन को एक पैसे का फायदा ना करती है। ये एथिकल अप्रोच है, दैट प्लैनेट इज नॉट जस्ट आवर्स, एवरी स्पीशीज हैज अ इंट्रिंसिक वैल्यू, चाहे वो ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल हो या नहीं हो। ये तीन अप्रोचेस है कि आपको बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, कैसे कंजर्व करना है। दो अप्रोच है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू है कि अगर टाइगर बचाना है पूरा फॉरेस्ट ही कंजर्व कर दो, ठीक है, ये होता है पूरा पूरा एरिया कंजर्व करना है इन सिटू। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, की कोई एक इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म है, उसको बचाने के लिए आप उसको वहां से फॉरेस्ट से निकाल के किसी स्पेशल जगह पे लेके उसे बचाओ, ठीक है, उसको स्पेशल जगह पे स्पेशल सेटिंग में रखोगे, होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में आपको क्या क्या रखना है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन सिटू है, बायोस्फीयर इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू है, देन आपका वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, नहीं वो एक्स सिटू है, सफारी पार्क एक्स सिटू है, देन आपका क्या रहेगा, कुछ तो रहेगा, कुछ रहेगा, सेक्रेड ग्रूव्स इन सिटू है, एक रहेगा इन सिटू, कोई बात नहीं, बताते बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से लगा के दम लगा के पीवाईक्यू जाएगा। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कितने हैं, पहले 25 थे, उसमें 9 ऐड हो गए, 54 है, ये 50 है। देन इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे मिलती है, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, मतलब बहुत ज्यादा जो नेटिव स्पीशीज जो कहीं और नहीं मिलेगी सिर्फ वहीं मिलेगी वो यहाँ पे मिलती है, प्लस एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, बहुत जल्दी ये खत्म भी हो रहा है, तो इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। ये तीन फीचर्स हैं आपके हॉटस्पॉट्स के। देन इंडिया की जितनी भी वेल्थ है हमारी, उसको तीन हॉटस्पॉट्स के अंडर आती है हमारी बायोडायवर्सिटी की वेल्थ है, जो मेन वेल्थ जहाँ हमारी कॉन्सेंट्रेटेड है, पहला वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, उसमें वेस्टर्न घाट्स इंडिया ऑफ कोर्स श्रीलंका के पास है। देन इंडो वाला रीजन, इसमें जो इंडो वाला रीजन है, जो सुंदरबंस डेल्टा वाला जो इंडिया का रीजन है वो इंडिया में आता है, जो बर्मा वाला रीजन है वो बर्मा में आता है, एंड हिमालयस जो है जो हमारे पास आता है वो हमारी वेल्थ है, बाकी हिमालय दूसरी कंट्रीज में फैले हुए उनकी वेल्थ है। तो मतलब इन तीनों के अंदर इंडिया का जो कंसंट्रेटेड वेल्थ ऑफ बायोडायवर्सिटी है वो यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। कितने हॉटस्पॉट है, 34 हॉटस्पॉट्स हैं, 25 प्लस 9, या तीन फीचर्स हैं, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म एंड बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस और एक्सीडेंट, ठीक है। टोटल हॉटस्पॉट जो एरिया कवर करते हैं वो सिर्फ 2% है, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट किया जाए अच्छी तरीके से तो आप 30% तक जो एक्सटिंक्शन की जो अभी जो एक्सटिंक्शन चल रहा है, मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, उसको 30% तक स्लो कर पाओगे। ये बात हो गई आपके हॉटस्पॉट की। देन हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ नेशनल पार्क बोल रही थी, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे पास, 90 नेशनल पार्क हमारे पास, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सारे के सारे इन सिटू। देन सीक्रेट ग्रूव्स इन सिटू कौन सा कहाँ मिलता है, ये अपने को लर्न करना है। खासी एंड जयंतिया जो है मेघालय में मिलता है, और मेघालय में जो ये मिलते हैं खासी एंड जयंता, वो बहुत सारे लास्ट रिफ्यूज है, मैंने रेयर प्लांट्स की, ये रेयर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे अगर ये सीक्रेट ग्रूव्स भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहीं में एंडेमिक है ये प्लांट्स मेघालय में, सीक्रेट ग्रूव्स में मिल रहे हैं। देन हमारा अरावली हिल्स, सबको पता है अरावली हिल्स जो है राजस्थान में है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पड़ रहे हैं। एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर, चंदा क्या नदी, चंदा एंड बस्तर एरियाज है वो एमपी के, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज, ये आपके पास 4 सेक्रेट ग्रूव्स हैं। अब आ जाओ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन आपने चीज बंदे को ऑर्गेनिज्म को उठाया कहीं छुपा के रख दिया, यार तुम इंडेंजर्ड हो, तुम खत्म ना हो जाओ, आओ तुम्हें मैं किसी इंक्लोजर में रख लूं, वहां तुम्हें खाना पानी मिलेगा, तुम्हें रिप्रोडक्शन के लिए मिलेगा, तुम्हें बचा लेंगे। अगर हम एनिमल्स के लिए बात करें तो ये जू होते हैं, अगर हम प्लांट्स के लिए बात करें तो बोटानिकल गार्डन होते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क से पीवाईक्यू आ चुका है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, इन सिटू में डाल देते हैं। सफारी पार्क जो है वो शेरों को पकड़ के लेके आ जाते हैं कि जाओ सफारी, यहाँ पे चले जाओ सफारियां घूमने, पता नहीं जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने जाते हैं, गाड़ी में व्हीकल्स में घूमने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है वो एक्स सिटू में आता है। अच्छा, एक्स सिटू का एडवांस्ड वर्जन भी है, आप ऑर्गेनिज्म को कंजर्व ना करके उसके गैमेट कंजर्व कर रहे हो, ये भी एक सिटू कंजर्वेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से। आप ऑर्गेनिज्म को कंजर्व ना करके उसकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के नए बच्चे पैदा कर रहे हो, ये भी आपका एडवांस एक्स सिटू कंजर्वेशन है। आप ऑर्गेनिज्म को कंजर्व ना करके उसका टिश्यू कल्चर से नए, उसके जैसे प्लांट्स में टिश्यू कल्चर करके नए प्लांट बना सकते हैं, ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है। और सीड बैंक्स, आप प्लांट को कंजर्व ना करके सीड कंजर्व कर रहे हो, सीड बैंक्स में ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो एडवांस मेथड्स 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं एडवांस एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। देन आपको दो याद करने हैं, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट हुआ था 1992 में, वर्ल्ड समिट हुआ था 10 साल बाद 2002। उधर से शुरू करेंगे, इंडिया यहाँ पे, इधर ब्राजील रियो डी जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील की कैपिटल है, वहां पे ये हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। देखो पहले अर्थ आई फिर वर्ल्ड आया, अर्थ के ऊपर तो वर्ल्ड बसा है, तो अर्थ समिट पहले हुआ, वर्ल्ड समिट बाद में हुआ 1992 2002। देन रियो डी जेनेरियो में शुरू किया, पहले आपने ब्राजील, फिर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका कैपिटल है, वहां पे दूसरे वाला 2002, ठीक है, हो सकता है तीसरा वाला इंडिया हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है, पर ये दो हम याद रखना है। तो ये बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है, ऑल नेशंस टू टेक मेजर्स टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। और यहाँ पे 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था देयर कमिटमेंट टू रिड्यूस रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बाय 2010। कोई कमिटमेंट से कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ कमिट भी नहीं कहा था, बस नेशंस ने कहा था हाँ बचा लो बायोडायवर्सिटी। फिर दूसरी बार पता चला कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कमिट कर दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। चैप्टर खत्म आप लोगों का, हाँ जी चैप्टर खत्म है, क्वेश्चन करोगे। The historic convention of biological diversity, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro, कौन से ईयर में था ना, रियो डी जेनेरियो कौन से ईयर में हुआ था। डिटेल 3 लाख है, गलत बोल दिया मैंने, हाँ यार 3 लाख है, 30,000 बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी 3 लाख है बीटल्स, प्लीज चेंज कर लो इसको यार। 1992 में हुआ था, 2002 में वर्ल्ड समिट हो गया था, ठीक है। इविल क्वाड्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है 2023 का, ये भी 2023 का क्या, ये 2023 में आया था, ये भी 2023 में आता है। इविल क्वाड्रेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा कॉज है एक्सटिंक्शन का, आपको मेरे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ऋतुरत्नवाल बायोलॉजी के नाम से मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। लिंक मैं टेलीग्राम उसमें देती रहती हूँ आपको, इंस्टाग्राम के स्टोरीज में डालती रहती हूँ, ठीक है। एक ही इतना बड़ा चैनल है ऋतुरत्नवाल के नाम से, 1,20,000 बच्चे उसमें, वही आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे आपको ये नोट्स है कल सुबह तक मिल जाएंगे, अभी भी डलवा दूंगी, कल सुबह तक पक्का डलवा दूंगी। बोलो, हुआक हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन 2022 का पीवाईक्यू देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। कौन सा एक्स सिटू नहीं है, कौन सा एक्स सिटू नहीं है,
मैं आप लोगों के लिए सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें हम मॉर्निंग में सुबह 7 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नीट 2024 के लिए, ठीक है। हर रोज मतलब कुछ 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। मैं सुबह सुबह जो बच्चों को टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है, अच्छा ठीक है, समझ नहीं आ रहा बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो वो सुबह वाली मेरी सीरीज लगा सकते हैं। मैं मंडे से शुरू कर दूंगी वो सीरीज, मैं बता दूंगी आप लोगों को कब से शुरू होगी। बोलो, नेशनल पार्क इंस्टीट्यू है, नॉट एक्सीटू नहीं है, वही बताना। ये इंस्टीट्यू है, बाकी सब एक्सीटू है ना। और बताओ, हाँ 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 हाँ, किस चीज के कॉजेज है बताना। ये चारों किस चीज के कॉजेज हैं? HOAC किस चीज के कॉजेज है? बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि भैया आप क्या इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं। ये जो 30-30 मिनट वाला लेक्चर है, 40 मिनट हो गया है, लेकिन 5 मिनट हमने लेट क्लास शुरू किया तो 6 मिनट और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। 30 मिनट में आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। आप इंप्रूवमेंट बता सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, बता सकते हैं। और मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैंने देख लिया आप लोग क्या क्या चाह रहे हैं कि मैं और पढ़ाऊँ, ठीक है जी। हाँ, किस चीज के बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है जी। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू, इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? इन सीटू में क्या है? टाइगर को बचाना है। प्लांट्स में रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस कैसे आएगा? स्मृति जरा बताना बेटा, क्या लिख रही हो तुम कमेंट सेक्शन में? इन सीटू कंजर्वेशन पूरा इकोसिस्टम, टाइगर को बचाना है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट बचा लो। टाइगर को बचाना है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट बचा लो बेटा। चलिए, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आई होप आप लोगों को अपने टाइम की वैल्यू मिली होगी। 30 मिनट के अंदर 40 मिनट के अपने अंदर पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने। पीवाईक्यूज देख ली पिछले 2 साल में कैसे आ रहे हैं। आई होप आपकी एनसीईआरटी पूरी रिवाइज हो गई है। अगर मजा आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक यू मैम जरूर लिखना, और ये भी बताना कि भैया नीट 2024 में कितना स्कोर एम कर रहे हो तुम बायोलॉजी के लिए, ठीक है। और इस सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लेके आऊंगी जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएंगे। और आप मेरे पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड तो क्या ही है, वो इतने कम प्राइस में रखे हैं हमने, इसलिए इतने कम प्राइस में रखे कि कोई बच्चा जो कहीं पे अफोर्ड ना कर पाए वो बहुत प्यार से हमारे बैचेस अफोर्ड कर ले, ठीक है। 1499 का प्राइस है। ड्रॉपर्स का भी बहुत कम रखेंगे हम लोग, बहुत कम रखेंगे, 100-200 रुपए बढ़ाएंगे, उतना ही रखेंगे। और ऑलमोस्ट इतने में आपको ड्रॉपर्स का भी मिल जाएगा बैच। तो आप पूरे साल आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे किराया भाड़ा लगाने की जरूरत नहीं है कि रिक्शा में बैठ के आप 30 रुपए देके जा रहे हो, 30 रुपए देके आ रहे हो। कुछ नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत है कि आप कोई महंगी बुक्स खरीद रहे हो या आप कोई महंगी टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो। इसी में 1499 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे मेरे बनाए हुए। आपको कुछ भी 1 रुपया और खर्च करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, ना किसी आपको कहीं ऑफलाइन ट्यूशन लगाने की जरूरत है बायोलॉजी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ना आपको कोई प्रैक्टिस, आपको सिर्फ पीवाईक्यू की बुक खरीदनी है, पीवाईक्यू की बुक खरीदनी, क्योंकि पीवाईक्यू वैसे तो मैं आपको नहीं पीवाईक्यूज भी मैं देती हूँ आप लोगों को, पर खुद खरीद लोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस उस तरीके से हो जाएगा। पीवाईक्यूज भी आपको ऐप पे ही प्रोवाइड करेंगे हम लोग सारे के सारे। पीवाईक्यू भी अगर कोई बच्चा नहीं बुक खरीद सकता तो मत खरीदो, ठीक है। कोई आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे क्वेश्चन आपको ये 1499 वाले प्राइस में ही मिलेंगे, ठीक है। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा आपका पूरा साल में। और बायोलॉजी में आपकी क्लास में, आपके स्कूल में आपसे अच्छी बायोलॉजी किसी की नहीं होगी, ये इतना मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। चलो फिर से मिलते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट करेंगे आपके सजेशंस पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर बेसिस की बहुत डिमांड है, मॉलिक्यूलर बेसिस 40 मिनट में खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें देख सकते हैं पार्ट्स में कर सकते हैं उसको किस तरीके से करना है। जल्दी मिलते हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज आप लोगों के लिए जल्दी लेके आ रही हूँ 2024 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। आई विल सी यू सून, थैंक यू, बाय। Species area relationship.
Species area relationship. Species area relationship. During his pioneering and extensive exploration in the wilderness of South American jungle. Species area relationship. South American jungle. German botanist, German naturalist and geographer. The reason species richness increase. Species richness increase with increasing explored area. Observe that within a reason, species richness increase with increasing explored area, but only up to a limit. In fact, the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be rectangular hyperbola. For angiosperm, birds, bats, and freshwater fishes. Angiosperm, birds, bats, and freshwater fishes. Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola as species richness. Species richness is equals to C. Y-intercept C A area slope of the line regression coefficient. Slope of the line regression coefficient. Z okay. Log S is equals to log C plus A log Z. Now Z log A, Z log A. Regression coefficient, Z regression. Regression coefficient. Log C plus Z log A. Log S log C plus Z log A. In hyperbola, on a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log S equals to log C plus Z log A, where S species richness, area, Z slope of the line, a regression coefficient, slope of the line, regression coefficient, y-intercept. Ecologists have discovered that the value of Z line in the range of 0.1 to 0.2, regardless of the taxonomic group or the reason, whether it is planting breeding birds in California or mollusks in New York State. The slope of the regression line are amazingly similar. Species area relationship among very large area like the entire continents, you'll find that the slope of the line to be much steeper. Z value in the range 0.6 to 1.2. Frugivores, fruit-eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. The importance of a species diversity to the ecosystem. Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definitive answer.
For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. What exactly is stability? What exactly is stability for a biological community? A stable community should not show no, a stable community should not show too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbance, natural or man-made, and it must also be resistant to invasions by alien species. We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor bloods provides some tentative answer. Tillman found that bloods with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. Increased diversity, higher productivity. Increased diversity, higher productivity. Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. At a time where we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its frog species is lost forever? Is the quality of life affected if, say, instead of 20,000, we have only 15,000 species of ants on Earth? There are no direct answers to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. Revet Popper hypothesis. Revet Popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Zitoing insight. Loss of biodiversity. Into the Earth's treasury of species. There is no doubt about the counting losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activities. The colonization of tropical Pacific Island by human. Colonization of Pacific Island by human is said to have led the extinction of more than 2,000 species of native birds. IUCN list 2004 documents the extinction of 784 species. 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plant. 338, 359, and 87 plants. Okay. In the last 500 years, 784 species, 30 vertebrates. First my invertebrates, then vertebrates, अनि मात्रै plants. Vertebrates र plant. Things in the middle of the dodo moratus, quagga, Africa, Thylacine, Australia. Dodo moratus, Africa, Thylacine, Australia, Stellar Sika, Russia, and 3 subspecies, Bali, Javan, Caspian of tiger.
witnessed the disappearance, 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Extinctions across taxa are not random. Some looks like ये slot complete हो गया. Shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the green scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of mammal, 32% of amphibians, then the gymnosperm 31, 32 amphibians, 31 gymnosperm, 23 mammals, 12% birds in the world face the threat of extinction.
32 सेकेंड्स है, मैं इसको लीव कर देती हूँ. ओके मुझे ना अथर्वा आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम, बट ये नाम सुन के ना एक उसके क्वेश्चन सुन के एक जोक याद आया. मैं फिर कभी बताऊंगी. ओके बाय द वे यू हैवंट चेंज्ड योर नेम, लेजी पर्सन. स्टार्ट कर दूँ? About how many times does the nymph of a Periplaneta americana undergo molting before becoming an adult? How many times nymph of the Periplaneta americana undergo molting before becoming an adult? Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globulin molecule synthesis. Select the correct statement. Thalassemia and sickle cell anemia both are due to a quantitative defect in globin chain synthesis. Thalassemia is due to less synthesis of globin molecule. Sickle cell anemia is due to quantitative problem of globin molecule. Both are due to qualitative defect in globin chain synthesis. Both are due to quantitative defect. A RH mother carrying a RH plus children, then antibody formed in mother's blood is transmitted against the erythrocytes of subsequent fetus. The RBC of the fetus destroys the antibodies present in and is then produced in mother's blood. Antigen produced in fetus blood is transmitted against the refer the figure and answer the question. Glucose. Okay. Refer the figure and answer the question. Choose the correct names. PQRS.
Okay, glucose 6-phosphate, glucose ATP, glucose 6-phosphate, then glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, option D, fructose 1,6-diphosphate. Which of the following sequence represent a possible pathway in the product of a secretory protein? Which of the following sequence represent a possible pathway in the production of secretory protein? Rough endoplasmic reticulum, secretory vesicles, ribosomes, Golgi apparatus. Rough ER is possible pathway in the production of a secretory protein. Rough ER, ribosomes, secretory vesicles. Okay, which of the following sequence represents a possible pathway in the production of secretory protein? Secretory protein, rough ER, endoplasmic reticulum, secretory vesicles, ribosomes, Golgi apparatus. Rough ER, secretory vesicles. Rough ER, ribosome. Secretory protein. Under a given concentration in blood, dissociation of oxyhemoglobin will increase. Oxyhemoglobin, dissociation of oxyhemoglobin tissue. pH of blood falls. pH of blood rises. Oxyhemoglobin dissociation. Concentration under a given concentration in blood. Secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by consumer. Secondary productivity by consumer. Which one of the following is a bioluminescent organism? Tinoplana. Which of the following statement is incorrect? Pollen grain remain viable for several months because their outer covering is made up of sporopollenin. No enzyme can degrade sporopollenin. Pollen grains are well represented in fossil strata due to sporopollenin. Pollen wall have cavities containing proteins. ABA stimulates the dash of stomata in the epidermis and stimulate dash of stomata in epidermis. Increases tolerance of plant to various kinds of stresses. Increases closure of the stomata and the epidermis and increases. Ions, lipid, carbohydrate. Match the column 1 with column 2. Choose the correct combination from options given. Ions, lipids, carbohydrate, nucleic acid, proteins. Match the column 1 with column 2 and choose the correct combination from the option given. Ions, lipids, carbohydrate, nucleic acid and protein. Protein 10 to 15%. Ions 1%. Eco 1. Lipids. Proteins 10. Identify the correct statement with respect to human excretory system. The two kidneys at the level of ovaries. Identify the correct statement with respect to human excretory system. The two kidney at the level of ovaries. In mammalian kidney, renal pyramids are seen in the medulla. The bunch of capillaries present in Bowman's
capsule is called Passimian corpuscle glomerulus and does not belong to uriniferous tubules. The main difference between prokaryote and eukaryotic cell is that the prokaryotic cell, the main difference between prokaryotic and eukaryotic cell is that in the prokaryotic cell there is no nucleus with a nuclear membrane. The main difference between prokaryotic and eukaryotic cell is that the prokaryotic cell, in the prokaryotic cell there is no nucleus with a nuclear membrane. One and 3. Materials are cell wall contains mitochondria and chloroplast. 1 and 2 mitochondria are chloroplast and prominent. In a random mating, population frequency of dominant allele is 0.7. What will be the frequency of recessive phenotype? In a random mating, population frequency of dominant allele is 0.7. Random mating. Frequency of recessive phenotype. The number of carbon atom present in the ribulose diphosphate is ribulose biphosphate diphosphate 5. An evolutionary process giving rise to new species adapting to new habitat and ways of life is called adaptation, microevolution, adaptive radiation, convergent evolution. An evolution process giving rise to new species adapting to new habitat and ways of life is called adaptation, microevolution, adaptive radiation, convergent evolution. Which of the following exhibit the highest rate of respiration? Growing shoot, highest rate of respiration. Germinating seed, rooted. Which of the following exhibit? The following exhibit the highest rate of respiration. Growing shoot apex, germinating seed. Highest rate of respiration. Root tip, leaf bud. Germinating schedule. Simple mechanical tissue devoid of ligninous. Simple mechanical tissue devoid of ligninous. Mechanical. Devoid of ligninous. I think column. Mechanical tissue devoid of lignin. Okay, match the following column 1 with column 2. Fermenting malted cereal and fruit juice. Production of large whole and Swiss cheese. Myocardial infarction and biogas. Clots and blood vessels. Digestion in sludge by bacteria and fungi resulting in emission of methane and other gases. Production of ethanol. Blood cholesterol lowering agent. Production of large amount of CO2. Eco 5, Eco 3. Fermenting malted cereal and fruit juice. Production of ethanol. Malted cereal and fruit juice. Production of ethanol. Eco 5. Production of large whole and Swiss cheese. Production of large amount of CO2. Correct. Eco 4. Deco 2. Biogas. Digestion of sludge by bacteria and fungi resulting in emission of methane and other gases. Okay. And finally Seco. Myocardial infarction. Clots in the blood vessels or blood cholesterol lowering agent. Myocardial infarction. Find the correct statement about female reproductive system. The oviduct
The oviduct and uterus are primary female sex organ. The ages of oviduct, infundibulum possesses finger-like projection. Fimbriae, infundibulum possesses finger-like. Which of the following correct statement? The uterus are paired and also called not paired. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the lower junction of the two labia minora. Beside corticotrophin releasing hormone CRH. Which other hormone also stimulates the release of adrenocorticotropic hormone ACTH? Aldosterone or epinephrine? Beside corticotrophin releasing hormone CRH. Which other hormone also stimulates the release of adrenocorticotropic hormone ACTH? epinephrine वाला कि ग्लूका कौन करे epinephrine नहीं करती कि ना. Cranial capacity of modern man is equal to which of the following statement is incorrect? Mosses along with lichens are the first organism to colonize the rock. एक incorrect बोला है. Sphagnum is used as packing material for transport of living materials. In liverworts, spores are produced after meiosis within the capsule. Funaria possesses unicellular funaria मैं सब कुछ भूल गई क्या? Mosses and lichens. In liverwort, spores are produced after meiosis within the capsule. Funaria possesses cellular unbranched rhizoid. Funaria. Merkensia funaria. Unicellular नहीं होगा, multicellular होगा शायद. Funaria. There are dash prostate gland in man. 1, 2. Prostate gland. Bulbourethral seminal. I think bulbourethral and prostate तो दो ही होना चाहिए. More than 2 तो नहीं है, no भी नहीं है. Either 1, either 2. There are. Link enzyme in cellular respiration is citrate synthase, pyruvate link 1. Pyruvate dehydrogenase. Thus, a crown gall bacterium is called as natural genetic engineer of plant. Crown gall bacterium is called natural genetic engineer of plant. E. coli, Streptomyces. Azobacter, natural genetic engineer of plant. Agrobacterium tumefaciens, Azotobacter. Crown gall. The impact of immigration on population density is immigration. Positive. Which of the following condition will stimulate the parathyroid gland to release parathyroid hormone? Blood calcium level. Fall in blood calcium level. Fall in bone calcium level. Rise in blood calcium. Fall in blood calcium. Which of the following statement is not true about the blood pressure? The blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer. If the blood pressure, which of the following is not true about the blood pressure? If the blood pressure of an individual is 140/90 mmHg,
or higher, it shows hypertension. The normal systolic pressure is 120 mmHg and diastolic pressure is 100 by 80 mmHg. Hypertension is caused by vasodilation. Which result in increased resistance to blood flow. Lower the taxon, more are the characteristics that are. Lower the taxon. मैं तो इसको ऑन करना ही भूल गई. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. Lower the taxon, more are the characteristics that the member within the taxon share. Lower the taxon, more are the characteristics that the member within the taxon share. Order is the assemblies of genre which exhibit a few similar characters. Okay. Species देखिए another family, I think. Order, class, phylum and kingdom. Species, genus, then देखिए मैं families was like you. Species, genus, third family. Order is the symbols of genre which exhibit a few similar characters. Cat and dogs are included in the same family, Felidae. Miss Felis. Binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. Which of the following statements are not correct? So fourth सा तिला eliminate करा, you eliminate करा. So either A or D. Binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. ये तो correct हो, U-deta करा. 3 and 2 is wrong. Cat and dog statement are not correct. With the taxon, more are the characteristics that in the taxon share. And the correct है था. Which of the following statements are not correct? What is the two incorrect one? Order is the assemblies of genre which exhibit a few similar characters. Two and two. More are the enzymes that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis and addition of groups to double bonds are called enzymes that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than the hydrolysis enzyme. Lysis, hydrolysis, dehydrogenase. ला मैं बायोमोलिक्यूल पूरा भूल गई शायद.
Zinc is considered essential for the formation of plant hormone, abscisic acid, inulinic acid, gibberellic acid. None of this. In the central nervous system, myelinated fibers from the dash, while the gray matter, white matter, while the non-myelinated fiber cells form the mango develop from monocarpillary superior ovary. Monocarpillary था ना. A heterozygous parent produces one kind of gamete, two kinds of gamete, each having two alleles. Two kinds of gamete, each having one allele with equal proportion. In amphibians, the alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chamber called cloaca. Herbivores are also called as first-order consumer. Herbivores obtain their food directly from plants. Select the correct statement. Genetic engineering works only on animals and has not yet been successfully used on plants. Genetic engineering. Genetic engineering works only on animals and has not yet been successfully used on plants. ये correct नहीं है. There are no risks associated with DNA technology. The first step in PCR is use of heat to separate both the strands. Target denaturation, annealing, and extension. This is the correct statement. DNA from one organism will not bound to DNA from another animals. The heterozygous tall plants are self-pollinated. Then tall and dwarf plants are obtained. When heterozygous are self-pollinated, tall and dwarf plants are obtained. This explains law of impurity of gamete, law of segregation, law of dominance, law of independent assortment. Okay. Heterozygous, law of segregation and law. Tall and dwarf plant. Heterozygous tall plants are self-pollinated. The tall and dwarf plants are law of segregation. If there are 999 bases in RNA that codes for a protein with 333 amino acid. And the bases at position 901 is deleted. Deleted. 901. 1, 2, 3. 3. This one is deleted. Such that the length of the RNA becomes 998. How many codons will be altered? कतिवटा कोडन अल्टर हुन्छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, 33, एउटा, 11, 333. कतिवटा कोडनले अल्टर?
आंसर की 33 जैसे लग रहा है. How many codons will be altered? 3, 7, 8, 4, 5, 6. The Indian carp in which swim bladder is present is labio torpedo scolioidal. PQRS. Select the correct option. P converts milk into curd, that is lactobacillus. P is yeast and R is HIV. Hey, shut up. P के से lactobacillus से yeast नहीं हो सकता. Lactobacillus, lactobacillus and R is yeast. Not this one. P is lactobacillus, correct, and Q is penicillin, correct. This one is correct. Correct option is choose. Or contains RNA as a genetic material, and cause the reduction in immunity of its host. RNA. R is yes. R is HIV. R is HIV, correct. But P is not. Yes, Q is HIV. S is used to manufacture wine and beer. That is yes. Species diversity increases as one moves from high to low altitude. High altitude to low altitude increases. First decreases, then increases. Which of the following options shows the correct measurement of adult human kidney? Length 10 to 12 centimeter, 10 to 20 centimeter, 2 to 6 centimeter, 10 to 12. दोनों में एक है. Width 5 to 7 centimeter, 10 to 12 centimeter. Thickness 2 to 3 centimeter. यही वाला सही लग रहा है. 120 to हाँ यही सही है. 120 to 170 ग्राम. Phloem fiber or bast fiber are made up of collenchymatous cell. Sclerenchymatous से होता है ना ये तो. Collenchymatous से. Phloem fiber. Phloem fibers are generally found in primary phloem. Primary phloem के secondary phloem हो. खुद ही confuse हो जाती हूँ. Option 95 तक करना है. 90 तक. Respiratory enzymes are present in the following organelle: peroxisomes, chloroplast. Respiratory enzymes: mitochondria, lysosome, chloroplast and peroxisomes. Respiratory enzyme mitochondria ETS.
Which of the following is incorrect statement? Blood group O person have anti-A and anti-B antibody in blood plasma. Incorrect, okay. Eosinophil resist infection and are associated with allergic reaction. RBCs contain carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. The T wave of normal ECG represent of depolarization of ventricle. T wave. PQR. PQRS. Atrial contraction. Ventricular contraction. Repolarization. T wave. Depolarization नहीं. Meiosis 1 result in meiosis 1 first column meiosis. Reduction in number of chromosome. Separation of chromatids. Increase in ploidy level. Both C and B. Reduction 1. Reduction in number of chromosome. Chromosome number reduce होता है meiosis 1 में. Both C and B. Increase in ploidy level. Chromatid. Chromosome number reduction. भी reduce में confuse हो जाती हूँ यार भाई साहब मैं क्या करूँ. As compared to meiosis, in mitosis, homologous chromosome form pairs. Daughters have half chromosome numbered. Telophase stage is absent. Prophase is shorter. Prophase is shorter as compared to meiosis in mitosis. Homologous chromosomes form pairs. Telophase stage is absent. Prophase is shorter. Prophase. Which of the following statement is not correct regarding the class Ascomycetes? Ascomycetes. Cornidia are the asexual spores produced endogenously on. Which of the following is not correct? Okay, endogenously on conidiophores. Cornidia. Ascospores are the sexual spores produced endogenously in Aci. Aspergillus, Neurospora, and Claviceps are Ascomycetes fungi. Mycelium is generally branched and septate in Ascomycetes. Mycelium. Branch and septate. Neurospora, Aspergillus, Neurospora, and Claviceps are Ascomycetes fungi. Successful produce endogenously on conidiophores. Phycomycetes are commonly known as sac fungi. Phycomycetes, Ascomycetes को sac fungi बोलते हैं ना. In Phycomycetes, ascospores, sexual spores. Hey, ascospores. Phycomycetes में sexual spores are produced endogenously in sac-like assay. Phycomycetes na both 1 and 2 are incorrect. Bryophytes grown in moist, humid places as Bryophytes grow in moist, humid places as they have no cuticles. Require water for fertilization. They do not have roots. Bryophytes.
राइसोइड तो होता है. Which of the following PGR can induce parthenocarpy in tomato oxen? Kainetini बोलते हैं ना ऑक्सन को. The first hard sound lub marks the beginning of ventricular systole. Ventricular contraction marks the end of ventricular systole. Is due to the closure of atrioventricular valve. Option 3. Lub is due to the closure of atrioventricular valve. Atrioventricular valve is produced by the closure of semilunar valve. First semilunar से नहीं होता है. Marks the end of ventricular systole. Marks the beginning of ventricular systole. 1 and 3. Statement 1. Malignant tumor normally remain confined to their original location. Do not spread to other body parts and cause less damage. Cancer arising from epithelial tissue of malignant. Cancer arising from epithelial tissue of internal organ and glands is referred to as sarcoma. Example. Malignant tumor. Thick filament. Which of the following statement about the striated muscle is a false? Thick filament is the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called the M line. Excuse me. In the center of each I band is an elastic fiber called Z line which bisect it. The thin filament are firmly attached to the Z line. The central part of thick filament not overlapped by the filament is called H-zone. All of these are correct though. A. Refer to the following figure and select the correct match. Fungal colony and bacterial colony. NCERT के ही है ना ये तो फिर भी भूल गई. ये लो. फंगल कॉलोनी फिर ये हुआ था. छोड़ो. Osteocytes possesses which type of scales? Palacoid, cycloid, ctenoid. Condrich thighs, ostrich thighs. Ostrich thighs. I have to come same. A band of sterile parenchymatous cell present in between two lobes of anther is called nuclear theca. Connector adhesive. A band of sterile parenchymatous cell present in between the two lobes of anther is called theca. जैसा लग रहा है. ELISA is used to separate viral RNA, purify protein, isolate DNA, identify specific protein. ये अभी तो पढ़ा था ना तूने बायोटिक में ये. ELISA is used to
separate viral RNA, purify protein, isolate DNA, identify specific protein. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ. When DNA is transmitted into mRNA, usually the mRNA remains single-stranded, but in some cases, an RNA can be made that is complementary to the mRNA. When DNA is transcribed, when DNA is transcribed into mRNA, usually the mRNA remains single-stranded. मुझे नहीं करना. When DNA is transcribed into mRNA, DNA is transcribed into messenger RNA. Usually the mRNA remains single-stranded, but in some cases an RNA can be made that is complementary to the mRNA. This is called dash, and its main function is to dash antisense RNA, block gene expression. Least productive. Deep ocean, moist forest, shallow oceans, grasslands. Deep ocean. Identify the wrong statement with respect to pleiotropy. Pleiotropy. One gene quality influences all the trait. One gene quality influences all the trait. The ability to have multiple effect. Geometric type of growth is observed commonly in higher plants, bryophytes, and geometric. Arithmetic and geometric. Gymnosperm. A molecular probe might be used to find a nucleotide sequence. Insert gene into a host. Molecular probe. मैं इतना जल्दी कैसे भूल सकती हूँ सब कुछ. Molecular probe might be used. Which of the following is an intercalating dye used to visualize DNA? Ethidium bromide. The detritus food chain in comparison to grazing food chain is generally longer equal shorter. The detritus food chain in comparison to grazing food chain. The vasa efferentia leave the testes and opens into the located along the dash surface. Vasa efferentia. यार पढ़ना तो था ना इसकी. What's the difference? Epididymis. Creative testis. तदकी vasa efferentia. Epididymis. What's the difference? ऐसी बातें. Vasa efferentia. Epididymis was the concept. Epididymis and opens into the epididymis located along the dash surface, anterior or posterior. इतना confusing लग रहा है यार, इतनी silly questions. In grana of chloroplast, the reaction of ADP plus Pi equals to ATP during DA shows oxidative phosphorylation. In grana of chloroplast, the reaction ADP plus during oxidative
फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना ये तो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी लग रहा है, क्लोरोप्लास्ट फोटोफॉस्फोरिलेशन ये आज ही तो पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है substrate level phosphorylation. Which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment? AI gift. Algae are characterized by thalloid plant body, unicellular sex organ, mechanical tissue, thalloid plant body. Select the correct option regarding the ploidy level of different structure of angiosperm ovule. Nucellus, MMC, functional megaspore, Nucellus 2n, मदर भी 2n ही होगा ना, ऑप्शन जी. Which of the following is the correct sequence of order of number of species in decreasing order? Apes, spices, reptiles, amphibians, mammals. ये vertebrates में दिया है, मतलब कि FB पर RAN था ना, तो fishes सबसे ज़्यादा, spices, then birds, apes, correct, option B right, reptiles, amphibian, option B. Spices, apes, reptiles, amphibians, mammals. In an endosperm cell of A, मैंने सही तो किया ना यहाँ पर, हाँ सही तो किया, decreasing order. If an endosperm, 80, 90, 15 more. If an endosperm cell of an organism, if an endosperm cell of an angiosperm contain 24 chromosome, endosperm, the number of chromosome in each cell of the root will be endosperm, 24 chromosome. Three, 6, 7, 3 years of 24. What if 24 ही हुआ तो? मुझे तो ये अच्छे से लग रहा है. चलो. About 70% of CO2 that enters RBC changes into HCO3 minus. About 70% of CO2 that enters RBC changes into HCO3 minus for transport in plasma. Hence, where it reconverts to CO2 for elimination. About 40% of CO2 that enters RBC. Carbaminohemoglobin. 40% na. Alveoli संसन्त alveoli माइना 1 चाहिँ करेक्ट हो, 2 त हैन, 70%. RBC मा कति जान्छ? 70% CO2. कार्बन किसमा 20 to 25 RBC मा जान्छ, 40% हैन. Only statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. The name of a plant order ends with order. इसमें भी दिया था ना वो वाला, क्या था? वीट और वो करके दिया था, वीट और एक था. सफंडल मैं गलत हो गई तो हो गई. मेमोरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सेरिब्रम, सेरिबेलम. सब कुछ भूल गई. सेरिबेलम कर दो. सरफेस एरिया
cerebrum ही कर दो. Memory of synaptic nerve at synapses is called synaptic membrane. Membrane of synaptic nerve at synapse is called membrane of synaptic nerve at synapse is called presynaptic membrane. Dendron. Membrane releases post synaptic membrane. कहाँ नहीं pre release करता है. Receptors for post में होता है. Option A सही है. Fertilized ovum is transported in uterus after fertilized ovum 1, 7, 8 or 19 days. गया बच्चों तो zoospores of brown algae are uniflagellate, biflagellated. Trachea, tracheids, fiber and parenchyma are the constituents of phallogen, phalloderm, phloem, xylem. क्या करूँ? Trachea, tracheids, fibers and parenchyma are constituent of trachea, tracheids, fiber and parenchyma. Phloem, xylem. Trachea, tracheids. What is the meaning of key? Carrying capacity. Yeast differ from rhizopus in being multicellular and synocytic. Yeast, ascospores, multicellular and synocytic, unicellular, multicellular and yeast differ in rhizopus in being synocytic तो rhizopus होगा ना, unicellular. Yeast unicellular होगा, uninucleated ही होगा. Development of fetus takes place in uterus. NADH of glycolysis reacts with an inorganic element during liberation of energy. This kind of respiration is NADH of glycolysis reacts with an inorganic element during liberation of energy. NADH किसके fermentation, anaerobic respiration, anaerobic respiration शायद. The colostrum provide naturally acquired immunity, naturally acquired passive immunity. बना ही दे रहे हैं ना. The temperature decrease oxyhemoglobin curve. When temperature decreases, oxyhemoglobin curve will become temperature जैसे ही decrease होगा oxyhemoglobin curve percentage saturation वाला ना, temperature decrease होगा तो more steep, straight, parabola, none of this. I think more steep. Temperature decrease होगा तो dissociate और ज़्यादा करेगा. Pressure of oxygen. पता नहीं क्या कर रही है. The joint of the radio ulna with the upper arm is hinge joint. Radius ulna, upper arm is hinge joint. Pivotal joints, okay, hinge joint. Select the correct statement for growth as one of the characteristics of living organism. Growth by increase in mass is a defining property of prokaryotic organism only. Non-living objects shows growth by increase in mass of the body. Intrinsic growth is a characteristic of all living organisms. यही वाला सही है. Which of the following statements are false? Outer cortex and inner medulla. Outer cortex, inner medulla are two zones in kidney, correct? Medulla is divided into two renal pyramids. Inward extension of cortex between the pyramids is called renal column of Bertini. Okay, क्या ढूंढने के लिए false? None of this होगा, सब भी सही है.
मैंने 19 क्वेश्चंस गलत किया और मुझे मिला 261 आउट ऑफ 360। वैसे भी इस बार भी मैं हॉगने ही वाली हूँ एग्जाम में, शायद टेस्ट का स्कोर देख के तो यही लग रहा है। कुछ नहीं हो सकता मेरा। सेवेंटी टू था तब। मैं बाहर घूम के आई, ओके, वो करने से पहले, स्लॉट स्टार्ट करने से पहले। वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं है शायद।
Select incorrect statement. The growth as one of the characteristics of the environment. Intrinsic growth is which of the following statement are not correct? 2 and 3. Order is the assemblies of genre which exhibit a few similar characters. Order is the assemblies of families. यहाँ पे क्या दिया है? Order is the assemblies of genre दिया है. Few similar character which exhibit a few similar okay, assemblies of family था ये. अच्छा तो दूसरा हो गया हम लोग का 3 का. Cat and dog are included in the same family वाला रहा. If you observe cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. The name of plant order ends with poils. Gadedi kahin ki. The name of plant order ends with. The name of plant order ends with. सब कुछ सही सही लग रहा था. Ales, ES, ALES. Oils, spindles, order, ales, okay. Anacardiaceae, ales, okay. ALES, order. The name of the plant order ends with ALES. Ales. Sapindales for mango and wheat. Oils. Man, Homo sapiens, genus Homo, family Hominidae. Primata, class Mammalia, phylum division Chordata. Housefly, Musca domestica, Musca, Muscidae, Diptera, Insecta, Arthropoda. Mangifera, Anacardiaceae family. Family ACE, AE. Yes, ales and ace family को लगी, order को लगी ales. Which of the following statement is not correct regarding class Ascomycetes? Conidia are the asexual spores produced endogenously on conidiophore. ये गलत था. मैं सब कुछ भूल गई, मुझे ऐसा लगता है. Ascomycetes, sac fungi. Asexual reproduction. Exogenously produced, वहां पर endogenously लिखा था बेवकूफ. Conidia are the asexual spores produced endogenously on conidiophore. ये गलत था, exogenously था ना. Conidiophore asexual हो,
Conidioforma produce unsa, but exogenously or not endogenously. Ascospores are the sexual. Conidia, asexual spores, exogenously. These differ from rhizopus and being unicellular and uninucleated. Okay. Phycomycetes are commonly known as sac fungi. Phycomycetes, okay. Basidomycetes. Oh, Phycomycetes तो ये था. Asexual spores, endogenously motile and non-motile. Lower fungi, Phycomycetes. Lysogamous and isogamous oogamous. कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कोई बात नहीं, it's okay. Asexual reproduction of spores. Fruiting body. Sporangia endogenously produce. Asexual reproduction spores. Sporangia endogenously produce. Asexual spores endogenously motile and non-motile. Asexual spores endogenously. Phycomycetes. Asexual spores endogenously produce. Sexual पनि endogenously नै हो. Asexual पनि endogenously. Check one sec. PQR and S. Which of the following statement is incorrect? Funaria possesses unicellular. Incorrect. In liverwort, spores are produced after meiosis within the capsule. Funaria possesses unicellular unbranched rhizoid. Funaria possesses unicellular unbranched rhizoid. Funaria possesses unicellular unbranched rhizoid. Funaria possesses unicellular unbranched rhizoids. Branch rhizoid. Mosses branch rhizoid. Branch rhizoid. Multicellular branch rhizoid. Which of the following is okay, the Indian carp is in which swim bladder is present is labio. Okay. Both cycloid and tenoid. Ostrich thighs. Oh, the skin is covered with both cycloid and tenoid scale. Ostrich thighs have both cycloid and tenoid scales. Thicker. Connector. A band of sterile parenchymatous cell present in between the two lobes of anther is called
Connector. A band of sterile. Let us understand the various types of tissues that organize and their organization in the transverse section of an anther. The biological nature of anther is very distinct in chat. A band of sterile parenchymatous cell present in between the two lobes of anther. Connecting the sterile tissue between the two lobes of an anther is called the connector. Band of sterile two lobes of the anther. Separating the theca. मैं क्या करूँ खुद का? Fiber, phloem fiber or bast fiber are made up of column gametes. About how many times does the nymph of Periplaneta americana undergo molting before becoming an adult? 13. और वन के सिलेबस में है क्या? मैं क्या करूँ?
Lyosis. Biomarkers. Lyosis. Enzyme that catalyzes removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bond. Lyosis. Okay. Transfer and so oxidoreductase में or oxidize or reduce. चलो lyosis ही तो लिखना था ना मैंने क्यों hydrolysis में तो dehydrogenase है इसमें oxidoreductase lyosis ligase में linking together in this. $70 to 90% water, 10 to 15% protein, carbohydrate 3%, lipids 2%, nucleic acid 5 to 7%, iron 1%, 1% iron, carbohydrate 3%, lipid 2%, nucleic acid 5 to 7%, protein 10 to 15%. Okay. Meiosis 1 results in reduction in number of chromosomes. Meiosis 1. Reduction in number of chromosomes. Medium term. Okay. Prophase is shorter. Comparison to mitosis. Okay. ये वाला तो सही था मैंने कल सही लिखा. Aerobic respiration था. NADH of glycolysis react. Respiration. NADH of glycolysis reacts with the inorganic element during the liberation of energy. Aerobic respiration. Ciao.
Link enzyme in cellular respiration is pyruvate dehydrogenase. Who cares? I do. Link enzyme in cellular respiration is pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. Okay, alcohol fermentation में alcohol dehydrogenase का pyruvate decarboxylase. So decarboxylase, alcohol dehydrogenase and pyruvic acid, pyruvate decarboxylase. High rate of respiration terminating C. pH of the blood falls. Under a given concentration of blood, dissociation of oxyhemoglobin will. High H plus. Mood stick graph. Hypertension is caused by vasodilation. Which of the following is not true about blood pressure? Hypertension is caused by vasodilation. ये तो सिली मिस्टेक हो गए ना. फॉल्स पूछा था. वन ऑफ दिस करना था.
एक ही प्रोस्टेट होता था, मैंने दो लगा दिया। There is a prostate gland in man. Paired seminal vesicle, a prostate and paired bulbourethral. Seminal दुईटा, bulbourethral दुईटालाई prostate एउटा, prostate कतिवटा हुँदो रहेछ? एउटा। ये भी गलत हो गया, पोस्टीरियर था भाई साहब, पोस्टीरियर था। Epididymis posterior. The vas efferentia have leave the testis. Leave the testis, opens into epididymis located to posterior surface. Post-EP. Epididymis posterior, मैंने anterior लगा दिया। Fertilized ovum is transplanted into uterus after 7 days. पढ़ ले बहन, पढ़ ले। One gene equally influences all the traits. One gene, एउटा gene equally influences all the traits.
Kinetin, cytokinin, cytokinin. A crown gall bacterium. कहाँ गयो crown gall? Microbacterium. Tumefacens. Tumefacens. Natural genetic engineer of plant. Fungal bacterium. Natural genetic engineer. Natural genetic engineer. Specific protein. ELISA. पता नहीं. कुछ नहीं होगा मेरा. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, लेकिन मैं क्या करूँ. ELISA based on the principle of antibody interaction. Detritus food chain in comparison to grazing food chain is generally shorter.
है